Assalamu alaikum dear students, hope you all will be fine. So as you can see that today we are going to start a new unit, that is unit number 5, right? We are done with our written work of unit number 4 yesterday, so today we are going to start unit 5. Take out your books, come to page 22. It's on page 22 and unit 5, right? Unit 5, page 22, and the unit name is Friends Stick Together. Friends Stick Together. Okay, today date is 26th April 2020 and the day is Sunday. Put on the date and day over here. And page 22, unit 5, unit name is Friends Stick Together. Read it again, Friends Stick Together, and it means कि दोस्त हमेशा जुड़े रहते हैं, एक साथ रहते हैं. Alright, friends, दोस्त, stick together, एक दूसरे के साथ रहते हैं, जुड़े रहते हैं एक दूसरे से. It means कि दोस्त जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, and whenever they are in a difficult situation तो वो वहाँ से they won't run away from there, वो अपने दोस्त की मदद करेंगे, उसको मुश्किल हालात में अकेला नहीं छोड़ेंगे. This is what it means, right? So इस यूनिट में हम दो फ्रेंड्स की स्टोरी पढ़ेंगे, जेफ एंड टॉम, right? Jeff and Tom, they live in the mountains near the forest, and they go to forest for walks and for having picnics, right? And these two friends, they are very happy with each other, but both of them, they don't like one thing about forest, and that thing is that the forest is having bears. कि फॉरेस्ट में क्या है, bears, मतलब रीछ है वहाँ पे. बाकी फॉरेस्ट जाना वो लोग बहुत पसंद करते हैं, बट वन थिंग दे डोंट लाइक अबाउट द फॉरेस्ट इज दैट कि फॉरेस्ट में bears हैं. Now one day Tom and Jeff, they both are talking about bears, and they say to one another कि अगर किसी दिन रीछ आ गया, bear आ गया, so they won't run away from each other, they will help each other, right? कि वो एक दूसरे को उसके सामने अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि एक दूसरे की मदद करेंगे, right? So one day Tom and Jeff, they were deep in the forest, और वो लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे पिकनिक मना रहे थे, सही है ना? So अचानक से क्या हुआ, पीछे से रीछ आ गया, बियर आ गया, राइट? जब पीछे से बियर आ गया तो उसके बाद क्या हुआ? नाउ फॉर दिस वन यू हैव टू रीड ऑल द यूनिट ऑन योर सेल्फ, राइट? एंड आपको पता चलेगा कि जब रीछ आ गया तो उसके बाद क्या हुआ. ऑलराइट, ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग आवर फर्स्ट पैराग्राफ. ऑलराइट, take out your pencils, put your index finger over here. The very first line of the first paragraph. Jeff and Tom were friends. Jeff and Tom were friends. दोस्त कौन कौन थे? Jeff and Tom, right? Jeff and Tom were friends. Jeff and Tom क्या थे? दोस्त थे. They lived in the mountains. Where they lived? They lived in the mountains. वो लोग कहाँ रहते थे? Mountains यानी पहाड़ों में रहते थे. उनका घर कहाँ था? पहाड़ों में था, right? Near the forest. Who were friends? Jeff and Tom were friends. And where they lived? They lived in the mountains. They lived in the mountains, right? वो पहाड़ों में रहते थे. And loved going for walks, in the forest nearby, and loved going for walks in the forest nearby. और उनको क्या चीज़ पसंद थी? They loved, वो लोग, उनको पसंद था, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करते थे. किस चीज़ को? Going for walks in the forest nearby, कि जो करीबी जंगल है वहाँ पे वॉक के लिए जाना, राइट? ये लोग वॉक के लिए कहाँ जाते थे? नियर बाय फॉरेस्ट, जो करीबी जंगल था वहाँ जाते थे. ऑलराइट, समटाइम्स दे वुड ब्रिंग अ पिकनिक,
बाज़ दफ़ा ये लोग वहाँ पे क्या करते थे, पिकनिक भी मनाते थे, अपने साथ पिकनिक का सामान लेके आते थे. दे वुड प्ले देयर एंड दे वुड ईट देयर, राइट. कुछ फूड आइटम्स या खेलने का जो सामान होता है, फॉर एग्जांपल दे वुड प्ले क्रिकेट देयर, राइट. सो समटाइम्स दे वुड ब्रिंग अ पिकनिक, बाज़ दफ़ा वो लोग वहाँ पे पिकनिक भी मनाते थे. There was only one thing they did not like about the forest. There was only one thing they did not like about the forest. और सिर्फ एक चीज़ थी जो वो जंगल के बारे में पसंद नहीं करते थे. बाकी उन्हें जंगल बहुत पसंद था. दे लव फॉरेस्ट एंड दे वुड लव टू गो देयर एंड दे वुड प्ले देयर. लेकिन एक चीज़ थी विच दे डोंट, जो उनको पसंद नहीं थी फॉरेस्ट के बारे में, और वो क्या थी, बियर्स, रीच, राइट. जंगल के बारे में उनको क्या चीज़ पसंद नहीं थी, कि जंगल में क्या था, जंगल में रीच थे, बियर्स थे, राइट. Now, if any bear comes out of the trees, if any bear comes out of the trees, अगर कोई भी रीछ दरख्तों में से निकल आए, अगर कोई रीछ दरख्तों में से निकल आए, I will stay with you and help you, said Tom. नाउ टॉम ने अब क्या कहा कि अगर जंगल में दरख्तों के पीछे से कहीं रीछ निकल आए, सो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, राइट, और तुम्हारे साथ रहूँगा. ये किससे कहा, जेफ से कहा, टॉम ने. व्हाट डिड टॉम से, टॉम सेड इफ़ एनी बियर कम्स आउट ऑफ द ट्रीज, अगर दरख्तों में से कोई रीछ निकल आए, आई विल स्टे विद यू, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, and help you, और तुम्हारी मदद करूँगा, because they are friends, so they will stay with each other and they will help each other, said Tom. Tom ने कहा. Now what is Jeff saying? I will help you too, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा. I will help you too, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा. After all we are friends, क्योंकि हम क्या हैं, हम दोस्त हैं. And friends they always stick together, and friends stick together, और friends क्या होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, said Jeff. Jeff ने कहा. Okay, what did Tom say? Tom said if any bear comes out of the trees, I will always stay with you and will help you. And what Jeff says, I will always help you too, because we are friends and friends always stick together, right. This was our first paragraph. Okay, so who are friends? Tom and Jeff they are friends. Where did they live? They live in the mountains near forest, and they go to the forest for walks and for having picnics. But one thing they don't like about the forest is that the forest is having bears. So both of them, they promise each other that if any bear comes out in the forest while they are in the forest, then both of them will help each other and they will stay with each other and they won't run from each other. Now come to the second paragraph. Okay, one day Tom and Jeff were deep in the forest. One day Tom and Jeff were deep in the forest. एक दिन टॉम और जेफ वो फॉरेस्ट में थे, वो जंगल में थे, जंगल में बहुत दूर तक गए थे, राइट. वन डे टॉम एंड जेफ वर डीप इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में बहुत दूर तक गए थे और वो दोनों जंगल में खेल रहे थे. दे वर हैविंग अ पिकनिक. दे वर हैविंग अ पिकनिक, जंगल में वो क्या कर रहे थे, पिकनिक मना रहे थे, राइट. दे वर having a picnic. They were having a picnic. Now suddenly, achanak, suddenly, how you will pronounce? Suddenly they heard a very large growl. Suddenly, what they heard? They heard
a very large growl. इन्होंने बहुत तेज़ रोरिंग की आवाज़ सुनी. ग्राउल मीन्स गर्राना, बहुत तेज़ आवाज़. एनिमल्स की लाइक टाइगर्स एंड लॉयंस जो आवाज़ निकालते हैं, राइट, उसको बोलते हैं रोरिंग या ग्राउलिंग. बहुत तेज़ आवाज़ एनिमल्स की जो स्पेसिफिक आवाज़ होती है, राइट. यू मे हैव हर्ड इट इन डॉक्यूमेंट्रीज और इन द टीवी, राइट. सो इन्होंने क्या सुनी? अ वेरी लार्ज ग्राउल, बहुत तेज़ गर्राने की आवाज़ सुनी. दे टर्न्ड अराउंड, वो पीछे मुड़े, उन्होंने पीछे देखा. हु टर्न्ड अराउंड? टॉम एंड जेफ टर्न्ड अराउंड. एंड व्हाट दे सॉ? They saw a great big bear. And saw a great big bear. और इन्होंने क्या देखा? एक बहुत बड़ा रीछ देखा. इन्होंने क्या देखा? एक बहुत बड़ा रीछ देखा. As you can see in the picture over here, look at the picture in your books. So what they saw? They saw a great big bear. इन्होंने एक बहुत बड़ा रीछ देखा. Up they jumped and started to run. Okay, अगर उन्होंने रीछ देखा तो इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए था? They would have to run, क्योंकि रीछ क्या है? ये एक डेंजरस एनिमल है. alright, so what they did? They jumped. उन्होंने छलांग लगाई. Up they jumped, right, उन्होंने छलांग लगाई, बहुत ज़्यादा डर गए. And started to run, और भागने लगे, और भागना शुरू किया. And started to run, और भागना शुरू किया. We will stop here up to this point, and from this line onwards we will read tomorrow, right? Tom tripped and hurt his foot. This is enough for you for today, right? So one day Tom and Jeff, they were deep in the forest. They were having a picnic. Suddenly they heard a very large growl. They turned around and saw a great big bear. Up they jumped and started to run. Okay, so today we read one paragraph, and in the next paragraph we read 3 lines, the first 3 lines, right? Now we will write difficult words, meanings of some of the words. Okay, look at some of the words meanings here. ये जो words meanings है उर्दू और इंग्लिश में, आप लोग इसको with pencils, ये जो हमने अभी पैराग्राफ्स पढ़े उसके ऊपर भी लिख सकते हैं, right? If you don't want to write it in your rough notebooks, alright? It is unit 5, friends stick together, and the words meanings. Okay, stick means attached या जुड़ना, adhere to something. Attached, A-T-T-A-C-H-E-D, attached या जुड़ना. We will write it like this. Next word is lived. Lived is the second form of verb live, and live mean रहना. So lived would mean रहते थे. Tom and Jeff, right? Tom and Jeff, they lived in the forest. ये उस sentence में है. Lived, रहते थे. Forest, and you know it. What is a forest? What does forest mean in Urdu? Jungle, right? We will write it like this. Jungle. Nearby, 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 करीबी या नज़दीकी, राइट? जो करीब की चीज़ होती है हम उसको बोलेंगे nearby. ओके, bear, B-A-R, bear. reach हम इस तरह लिखेंगे, राइट? लुक एट दिस वर्ड reach, हम लोग इस तरह लिखेंगे. herd, H-E-A-R-D, herd. It's the second form of verb hear, which means sunna. So heard would mean suna. We will write it like this. And the last word is growl. G-R-O-W-L, growl. And it means gharrana or roaring. Gharrana. We will write it like this. G-R-O-W-L, growl. Okay. After writing these meanings in your books, come to note down your homework for today. Okay, so this is your homework for today. Your homework for today is that you have to read unit 5 on page 22. आप लोग first 2 paragraph भी read कर सकते हैं, and you can also read whole unit. Homework for today is reading of unit 5 on page 22.